It was just love for Ravencha. Did you start speaking English before learning it? No. So they told you how to identify the letters, right? Correct. Unless we listen to English a lot, and listening English doesn't mean kahaku bhi English suniba. Jo mala thik English kohchandi taku suniba. When we give a lot of time to listening good English, we start speaking good English. But we become a public speaker when we start listening to our own voice. If I talk about the women who want to restart their career after a gap, that can be motherhood, that can be anything, तो से gap रे जेतेबेले women माने रहुचंती ना somewhat they lose confidence. तो सेटा केमती से माने regain करिवे, youth माने से confidence टा develop केमती करिवे, consistent केमती रखिवे. Practice makes a man, women, old man, old women, gentlemen, ladies, queer groups, everybody perfect. आमे रेडियो टीवी जुगरे जन्म होइथिलु, we are different. सेमाने स्मार्टफोन रे टाइम रे 5G टाइम रे जन्म नहीं छथि, so they are different. To be a part of this part of the world, काहेकि ना जो जगन्नाथଙ୍କର माने अढ़े पाहाचरे काशी विश्वनाथ बसिछंती, से जगतर नाथ जगन्नाथ केते उच्च न होइथिबे. Namaskar. Welcome to Udaan Academy podcast by Trupti. The show where we talk about communication, confidence, and limitless possibilities. In today's podcast, we have a guest, Professor Dr. Anshuman Mahanti, a renowned personality of Orissa in academic industry. Sir is a proud alumni of Ravencha University, having over 18 years of experience not only into teaching English literature and language, rather into providing training to corporate professionals, even mentoring, counseling, proctoring, and the list goes on. Without delay, let's welcome Dr. Anshuman Mahanti, sir. Sir, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. Thank you so very much for inviting. It's really a pleasure being here. Thank you, sir. Sir, केमती अछंती? बहुत बढ़िया. How are you? I'm also doing good, sir. Sir, जति के आपन को बैकग्राउंड मु जानि छि, आपन को स्कूलिंग ता आईसीएसई थिला, तापर आपन कॉमर्स पढी थिले. तो ये जो सडन चेंज ता कोन माने was there any situation which inspired you or Not at all. was it predestined to make English literature? It was just love for Ravencha. Oh. Okay. So what is the connection of Ravencha and English literature and language? No, I'll tell you. The story goes on like I got just 65%, and pretty much I was not at all eligible to get into science. My father wanted me to get into science. I wanted to study arts, but then there is always a kind of pressure. No, friends are taking science, so you need to get into science. So I thought, no, my motto is not to get into science, but to get into Ravencha. Okay. And I was into NCC, so I had this benefit of 5% from the marks secured. Okay. So I applied everywhere in science, knowing that I am not going to get it. Then in Ravencha, I applied for commerce. Fortunately, I got it. Okay. But I would like to add on something very interesting. In my plus 3, I didn't get a seat in commerce in financial accounting. So I took admission at Dhenkanal Autonomous College, financial accounting. Okay. But I had applied for English honors because I always wanted to. Okay. And I got a seat in Ravencha English department. Okay. I took a TC from Dhenkanal, got into Ravencha. For PG, I got selected for MS Law College, now university. अच्छा तमाने आपण कोचिंग सर ग्रेजुएशन पर भी गोटे जंप हेतिला. हाँ पूरा. I was about to get into this, take admission like at MS Law College. Then I got intimation from Ravencha English department for PG. Again I went on for English department. So actually it was slightly about English literature, but it was more about Ravencha. I had heard a lot of stories about Ravencha, so Ravencha had been my weakness, I would say. अच्छा सर आपण को घर को जस्ट आसीबा आगु मु देखिले आपण को माने किछि पिल्ला माने ऑर्फन पिल्ला को आपण एवरी वीक रे संडे दिन आपण टीचिंग प्रोवाइड करूछंती, तो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सेटा आपण माने कोन पाई का करूछंती, जस्ट टू गेट द नेम एंड फेम और टू सर्व द सोसाइटी, और what is the motto behind, or how would you like to pass the message to the youth? No, it's not about the orphans. It's about people, those who are
in need of English education. And somehow or the other, they think that I can train them well. But I am not available at a lot of places. Earlier, I used to be a freelancer. I used to teach at varieties of the organizations. But then I thought, there is what I can do to the society as a teacher. Because obviously, I have to earn my livelihood. So I have to take a salary from somewhere or the other. I have to charge. So Sunday, I keep certain classes for the people, those who want to develop in English. And that's why I do not charge anything at all. There are people those who really need a lot of grooming sessions in English, and that's why I think this is something that I can do to the society. Yes, I have a great ambition of conducting such kind of free classes for a greater mass, but I'm looking forward for the day to come. Yes, if time permits, the day comes, I'll definitely instead of Sunday, every weekdays I'll be, weekends, weekdays I'll be contributing at least 1 hour to teach people without taking any fees from them. That's a very noble thing you have thought of. All our best wishes to you. Thank you so much. But actually, I'll tell you, it's not a big thing now because in terms of this internet age, many people, they can get a lot of information from internet. So it's not that if I'll provide free education, then the society will change. Actually, it's not going to change. But yes, for my own satisfaction, I am doing it. I'll be doing it. Okay. Sir, it's been more than a decade. You have been providing teaching inside the classroom, even to the corporate professionals. So what is the difference between classroom learning and the corporate needs? Look, it's something to explain. A kindergarten teacher cannot take care of the professional students. And a professional teacher who deals with the professional students cannot go and handle the kindergarten classes. Right. Why? Because there is age that is different. Okay. And with the age, the mindset is different. Same is the case here. When we teach a student inside the classroom, generally I teach students from higher education. So there, after all, they are students, they are teenagers, they have a kind of insecurities, and we have to counsel them and teach them. But when we move on to the corporate, we are not amongst the people, those who need counseling. Some they require, but not all. They are extremely matured, they have seen their own lives, they have come across varieties of situations. So what they need is just polishing their skills. They are not there to learn something, but they are there to be taught how to groom and polish their talent or what they lack. So this is the difference. At one place you need to instill and then polish. At the other place you need to just polish and make them shine. This is the difference. Sir, our channel mostly focuses on the rural part of our beautiful state, Odisha. So if I talk about the rural students, they mostly hesitate to speak the language because of the fear they have. So what would be your personal message to them in order to come out of that fear zone? Okay. So एठी मु एया कहिया को चाहिबी कि गोटे जिंस आमे एक्चुअली जो नेचुरल प्रोसेस रे सिखु आ गोटे जिंस बहुत आर्टिफिशियल प्रोसेस रे सिखु. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ लैंग्वेज, व्हेन यू वर अ किड, राइट, डिड यू जस्ट take birth and start writing? No. Did you just take birth and started talking? No. Did you just take birth and started reading? No. When did you take birth? Were you able to listen? Even I don't know. Probably no. No? I you guess sure? it takes. Whatever. Like, when you slightly, you were slightly growing, what is the first thing you started doing? Listening, probably. Listening, yes. And after you started listening, and you started listening Odia, right? So you started speaking Odia. हाँ, true. घरे समस्ते कथा कहती तो सेटा को हमें सुनी सुनी के सीखू. हाँ, just imagine a situation. ओडिसा रो गोटे
Odisha ra, let me give you a very a very weird kind of story. Gote twin Odisha रे जन्म हेले तांका बापा माँ के ही जानना हंती. Okay. आउ गोटे ट्विन फॉर एग्जांपल ए एंड बी ए को अडॉप्ट करले एंड व्हेन दे वर जस्ट 3 months ओल्ड Okay. ए को गोटे विशाखापट्टनम रा गोटे फैमिली अडॉप्ट करके नहीं गले Okay. बी को कोलकाता रा गोटे फैमिली अडॉप्ट करके नहीं गले. Okay. नाउ टेल मी व्हेन दे विल ग्रो अप बोधे 1.5 वर्ष रे जने कहिबा ठीक से आरंभ करिबो. हाँ, हाँ. 1.5 वर्ष पर ए जने ए और बी ओडिया कहिबे की No. श्योर Sure. काहे की Because ସେମାନେ ଯେବେ ତାଙ୍କର listening ability ଟା start ହେଲା they started listening to their language. व्हाट ओके आंध्र प्रदेश जो फैमिली अछि language थिबो तांकर. माने तेलुगु कहिबो तेलुगु कहबो. जी वेस्ट बंगाल कोलकाता रे बेंगली कहबो काहे की समान तो ओडिया बापा मा थिले ओडिसा रे जन्म होइथिले ओडिया कहीं कहिलेनी काहे ना से ओडिया सुनिलेनी सुनिलेनी. सो नेचुरल प्रोसेस कोन हला से माने सुनिले तेलुगु बा बेंगली जोटा सुनले सेटा ग्रैब करले कहिले आ कहिला परे आमे पिलांकु गोटे वियर्ड माने गोटे वियर्ड चित्र देखाऊ आम पई वियर्ड न होइथाय पारे गोटे पिलाटे पई सेटा गोटे वियर्ड पिक्चर. सो समान जानना एटा कोन किंतु आमे तन कहिलु एई पिक्चरटा हला ए बा एई पिक्चरटा अ से सेटा को जानिले तापर से आइडेंटिफाई कला एटा अ आ ई ई करेक्ट. और तापर गोटे दिन आसिला आमे खड़ी छुआई कि ताकू कहिलु कि अ लेखे. सो प्रोसेस कौन हला लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग. लेट मी आस्क यू डिड योर पेरेंट्स टॉक टू यू इन इंग्लिश? No. Did you start speaking English before learning it? No. So they told you how to identify the letters, right? Correct. आगे हमको पढ़िबा को कहा गला तापर हमको लिखिबा को कहा गला आ हम जीवन जाक आमे से आमे दी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग यदि लिसनिंग टाको 1 स्पीकिंग टाको 2 आ रीडिंग टाको 3 आ राइटिंग टाको 4 कहिबा तब हम ओडिसा रे कोन होची रीडिंग राइटिंग 3 4 3 4 3 4 ओके आ तापर हठात की कहि दे जाउची इंग्लिश को एंड दैट इज नंबर 2. नंबर 1 जोटा लिसनिंग ता विषय के कहू नहांती. ओके. So unless we listen to English a lot and listening English doesn't mean kaha ko bhi English suniba jo mane thik English कहउछथि ताको suniba. When we give a lot of time to listening good English we start speaking good English but then this is not the only thing. आमे अन्य जन को सुनिला माने आमे इंग्लिश कहि जानिबा किंतु बहुत बड़ मास सामने केते बेले कहिबा जेते बेले आम वॉइस टाको आमे निजे सुनिबा. करेक्ट. सो निजे बड़ पाटरे कहिबा दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी स्टार्ट listening to English we start speaking English but we become a public speaker when we start listening to our own voice kind आम कान आम माइंड acquainted हबो आम वॉइस टाको प्रोसेस करिया को इंग्लिश रे जोटा को आम माइंड प्रोसेस करूथिला ओडिया रे बा हिंदी रे बा अदर को भी गोटे लैंग्वेज रे. So this is what they need to practice and they need to really understand. Once they जो listening, speaking, reading, writing ए फॉर्मेट रे पढ़ी जिबे अच्छा अभिका हमें पास्ट को जाय कि ए प्रोसेस को बदली परिबानी किंतु हमें कोन करि परिबा हमें लिसनिंग बहुत प्रैक्टिस करि परिबा स्पीकिंग बहुत प्रैक्टिस करि परिबा. ओके. वंस से जिनसटा कर दबा आई एम प्रिटी मच श्योर जने जदी रिलीजियसली फॉलो करिबा लिसनिंग स्पीकिंग को 6 months they can be very good speakers. I am the live example because I have studied in vernacular school. तो तापरे मु भी सेमती जोटा आपण कहिले मु बारंबार सुने जो मान को माने I started my career in a multinational company which is Genpact and I was associated with one UK process. तो सेठी सेमन जत यूके क्लाइंट्स को डील करंती देयर आर पीपल जो माने फ्रंट लाइनर्स थिले बहुत ही भलो कुहंती तो मते सेटा सुनिया पे बहुत भलो लागे तो मु पूरा मन ध्यान दे सुने लुचे लुचे के भी लिखि आने सेते बेले कोन आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 तो फोन रो येटा एते नथिला स्मार्टफोन्स तो मु लिखि के आने सी किछ ओडे कैची वर्ड कहले मु नोट कर दिए तापर घर को आने ता ऊपर पांचटा सेंटेंस बनेबी कि से वर्ड ता मो मोहरे में फेमिलियर हो ताकि मु से पर्टिकुलर सिचुएशन में कहबन दैट्स व्हाई आई आल्सो लर्नड टू स्पीक गुड इंग्लिश. And now you are a wonderful speaker. And you are you are not just a wonderful speaker, you are a wonderful teacher. You're grooming students to become wonderful speakers. Thank you. Even हमरो MBA रे कॉलेज रे बिजनेस कम्युनिकेशन रे जोडा रहउची LSRW से पैटर्न रे ही पढ़ा होची बट आपण जोडा कहिले मु जस्ट के एम्फसाइज कर देबे ऑडियंस मान को पय के जदि स्कूल रो सेटा को इनकलकेट करा हे जिवो माने जो भी लैंग्वेज टीचर पढ़ौथिबे फोनिक ड्रिलटा LSRW जोटा आपण कहिले सेही फॉर्मेट रे जदि
जदि टिके एम्फसाइज करा जिवो एटलीस्ट स्टैंडर्ड 8 7th 8 रोडे पिला को से 3-4 इयर्स भितर सेति की तार स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप हे जिवो एबे एक्चुअली बहुत गुडे स्कूल्स गुडा करे स्पेसिफिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईसीएसई स्कूल्स गुडा करे प्रोबेबली केतोडे सीबीएसई स्कूल आई गेस बोधे फोनिक ड्रिल आरंभ होई गलानी सो इट्स नॉट दैट दे नीड टू जस्ट लिसन टू इंग्लिश दे नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस in English all by itself. English is a language wherein the structure is divided into two parts. आमे ओडिया रे म कहिले आमे म लेखुछु आमे हिंदी रे म कहिले म लेखुछु किंतु इंग्लिश रे एम कहिले आमे म लेखुनु. English is divided into two categories. गोटे होची alphabets, the other one is sounds. आउ प्रॉब्लम आम पाखरे हे जाउची आमे लेखिलु एच ओ यू आर आमु कुहा गला कुह आर काहे की आर ना एच टा साइलेंट अछि ओ यू आर इज आर एंड वी नेवर गेट अ प्रॉपर रीजन द रीजन इज दैट इन इंग्लिश writing is completely different it has 26 alphabets but when we are talking about the speech pattern there are 44 sounds right so a jinsota jetale pilanku thik bhabare sikhai jibo they will get to know about the difference between the alphabets and the sounds 26 alphabets 44 sounds 6 vowels sorry 5 vowels 20 vowel sounds 21 consonants 24 consonant sounds ए जो difference ता जानी जिबे they will really be very good in terms of their pronunciation right सर एठी जेहेतु सीबीएसई आईसीएसई कथरा उठिला मु भाबुची किछि लोकन को हमें क्लैरिटी देई परिबा गोटे पिल्लार बापमा सबबळे कंफ्यूज्ड होंती whether to put their kid into a CBSE school or ICSE school so what would you say on this Even I, being a mother of a child, was in this, diplomatic zone whether I should take it in CBSE or ICSE. I am a product of ICSE. So mo kahibi and I kintu unbiased hai ki kahibe not because unbiased hai ki let me give you my life example. I felt ICSE would be more suitable for my son and my daughter set pe diyon ko mo ICSE re hi padhauchi but I have worked in organizations wherein CBSE has had been affiliated okay so कोटा भलो कि खराब नुहे कहीं ना इंडिया रे में देखिया को जिबा सीबीएसई रो पैटर्न ता बहुत मात्रा रे एक्सेप्टेड अछि इन टर्म्स ऑफ आईसीएसई सो दीटा जाक ठीक कोटा भूल नुहे पेरेंट्स माने जदी सेई गोटे कंपैरिजन रे बसी जिबे सो एटा ले कटक ता गोटे भलो शहर ना भुवनेश्वर ता गोटे भलो शहर एटा से भलिया गोटे क्वेश्चन जो माने कटक रे रहउछन से माने भुवनेश्वर को भलो कहिबेनी जो माने भुवनेश्वर रे रहउछन कटक को भलो कहिबेनी जो माने दिल्ली रे रहउछन मुंबई को भलो कहिबेनी हां जो माने मुंबई रे रहउछन माने दिल्ली को भलो कहिबेनी सो आईसीएसई रा गोटे अलगा ऑरा अछि जो सीबीएसई रा गोटे अलगा ऑरा अछि डिफरेंट ऑरा इन आईसीएसई it's slightly टिके ना को जो आमे कहिबा पाठर लेवल टा टिके हायर थाए सीबीएसई because this is completely activity based तो टिके एकेडमिक प्रेशर टा कम रहे सीबीएसई कम रहे सो सेटा गोटे हिसाब रे पिलांगा पई भलो सर एठी पिला माने पिलांगा पेरेंट्स माने भाबंती कि आमे पिलांको प्रेशराइज कराडा ठीक न तो इट इज बेटर टू it is up to their own choice it's up to their own choice सर मते लागे मोर पर्सनली मु गोटे एकेडमिशियन हिसाब रे भाबे कि एकेडमिक कैन नॉट बी अ प्रेशर फॉर अ चाइल्ड it can never be because it is a brain exercise करे ना नहीं एक्सरसाइज करे बट अगेन नो जदी हमें पिला को खाली बाध्य करबा तो पाठ पढ़े ना ना सेटा तो पाठ संगरे साठ दरकार एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इनेट स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल जणे आईसीएस रे पढ़ी की भलो टेबल टेनिस खेली परिबो भलो खो खो खेली परिबो भलो योगा करि परिबो भलो डांस करि परिबो किछि करि परिबो सेम इज द सीबीएसई रे भी खाली पाठ हमें जदी गोटे पिला को ऊपर गोटे प्रेशर दबा कि तो 99% आण कि 94% आण मोर गोटे सांगटे अछि सी दिने भारी व्यस्त है कि मते फोन करला कहला कि मो झियर 70 कोन 94% अछि मो भारी मन दुख मो कहली अरे भाई काहे कि मन दुख हेते तू तो एते परसेंट पाउ नथि तू तो 60% पाइबा को भारी कष्ट होतिला ना नाही एबे का कंपटीशन बहुत अलगा मो झियर मिनिमम 99 ता हबा मु चाहू छी 98 न हले मते भल लागिबनी कहला अरे अद्भुत कथा अद्भुत प्रेशर एगुड़ा किंतु मो पुओ को मु कहली तू 60 आणे कि 50 आणे कि 40 आणे जहां आणुचो आणे मते कहबुनी को प्राइवेट कॉलेज रे पढिया पे मते जो गवर्नमेंट कॉलेज तोर हेई परबो सेठी पढिबो प्राइवेट रे मु पढिबिनी मु निजे प्राइवेट रे चाकरी करछि किंतु तू जो गवर्नमेंट रे बजेबू मु तते प्राइवेट रे
ପଠେଇବେନି ପଠେଇବି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନକ୍ଲିନେସନ ଟା ବୁଝି ଯାଇଥିବ ନା ଆପଣ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରେସରାଇଜ କଲେନି ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ କି ତୁ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ତତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏହା କହିଲି ତୁ ଆର୍ट्ସ ପଢେ, ସାଇନ୍ସ ପଢେ, କମର୍ସ ପଢେ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ, ତୁ ଯୋଉଠି ପଢୁଛୁ ପଢ। ମୁଁ ଅନନେସେସରିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରିକି ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛାଡିବିନି। ତୁ ଯୋଉଠି ପଢୁଛୁ, ଯେମିତି ମୋ ବାପା ପଢିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ, ମୁଁ ପଢି ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ, ସେମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ। କାହିଁକି ଲୋକ ପଢେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ପଢାନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ नो, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ବହୁତ ଥାଏ, ବହୁତ ଥାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିଜେ ବହୁତ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ବହୁତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପ୍ରେସର ଏକାଡେମିशियंस ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଥାଏ, ଏତେ କମ୍ପିଟିଟିव, ଏତେ ଆକାउंटेबिलिटी ଥାଏ, ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ पूरा पैम्परिंग करिକି पाठ पढ़ाती। माने फॉर एग्जांपल गोटे गवर्नमेंट रे गोटे धर फॉर एग्जांपल टीचर थिबे, मु कहूनी सेठी अकाउंटेबिलिटी नाही, सेठी अछि, किंतु प्राइवेट रे अकाउंटेबिलिटी बहुत अधिक। से जो कहीं कि ना जॉब स्टेबिलिटी टा सदा बेले गोटे क्वेश्चन रही आसीची रहिबो प्राइवेट वर्ल्ड रे, कहीं कि ना तमे अकाउंटेबल नुह, यू विल बी आस्क्ड टू लीव। बट इन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब इज वेरी हाई, से पे समस्त चाहती गवर्नमेंट जॉब पाई। किंतु प्राइवेट रे कोन होची ना, जदी समय टिके भी किछि भूल करूछंती, देयर इज अ रिस्क ऑन देयर जॉब। सो से माने पिला को पाठ पढेबे, बहुत गुडे वर्कशीट्स प्रैक्टिस करेबे, बहुत गुडे रिवीजन क्लासेस करेबे, बहुत गुडे एक्स्ट्रा क्लासेस करेबे, निजे नोट्स लिखिबे, नोट्स देबे, क्वेश्चंस सॉल्व करिवे, क्वेश्चन देबे। के इंटरप्ट करूची गवर्नमेंट स्कूल कथा मु कहिबि जदी आजिकल गवर्नमेंट स्कूल को गले भी से टीचर्स माने कहउछंती कि आमे पिला को पढेबु केनते, पढेबा लायक पिला ही आसुना हंती एठी को, बिकॉज़ मैक्सिमम पेरेंट्स को इंक्लिनेशन रोची ईदर टू पुट देयर चाइल्ड इन ईदर सीबीएसई और आईसीएसई, और जदी सेति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने एटलीस्ट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बट दे डोंट वांट टू पुट देयर किड इनटू गवर्नमेंट स्कूल। तो बाकी कोन हेगला ना, एठी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ता हे गला, तो गवर्नमेंट रे बहुत माने लो ग्रेड रही गले, जो माने को पाठ दरकारी नै, सी जाउचंदी केवल जो स्कीम्स गवर्नमेंट रो सेटा पाइबा पई, सेटा हला टीचर्स कहउचंदी कि आमे तांग पिला काहे पढिलेनु कहलो, तापर पूरा कम्युनिटी पळे आछंदी आम ऊपर चार्ज करिया पे, मो पिला काहे कहिले। तो एठी माने देखंतु पेरेंट ताने भलो पेरेंट्स माने गवर्नमेंट स्कूल रे ताको पिला दो ना दे, किंतु पिला पढि सरले गवर्नमेंट जॉब टे कर बोली। अच्छा, ए सिचुएशन ता हेला कोन पई? कोठी तो गोटे क्राइसिस आछितबो हमरो एटा पास्ट रे गवर्नमेंट स्कूल्स गुडा करे एई जो माने एजुकेशन को समहाउ द अदर नेग्लेक्ट करा गला, सेथि पाई ही प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस फ्लरिश करले। जदि आगुरु भी तो बहुत हमरा बहुत चीफ मिनिस्टर हेइछंती, बहुत बड़ बड़ ब्यूरोक्रेट्स अछंती, सेमान सब गवर्नमेंट स्कूल रे आछंती, किंतु परवर्ती काल रे से शिफ्ट ता काहे कि प्राइवेट को हे गला, काहे कि ना गोटे टाइम आसिला जो जगह रे गवर्नमेंट रू लोक भलो रिजल्ट कलेनी, किंतु देखिले प्राइवेट रे आमे टिके अधिक टंका दउछु, रिजल्ट भलो होउची। जो जेमती मु कहिली कि प्राइवेट रे अकाउंटेबिलिटी बहुत अधिका, गवर्नमेंट रे से माने क्लास नेबे, मे बी डाउट बहुत भलो टीचर अछंती, मोर गोटे टीचर देवता तुल्य टीचर अछंती, देवी तुल्य टीचर अछंती, से माने क्लासरूम बाहर भी से माने आसी पाठ पढांती, फ्री पाठ पढांती। मोर जे गाइड प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय महांती, सीए तो माने तांको जीवन रा बहुत बहुत वर्ष जाईची, सीए पिला को मागणा रे पढाई छंती, खाली मागणा रे पढाई नांती, निज घरे गोटे घर को कन्वर्ट करके हॉस्टल भलिया तांको मागणा रे रहिबा, मागणा रे खाइबा देकी पिला को पाठ पढाईकी, तांको पिला माने वर्तमान स्टूडेंट माने वर्तमान जो प्रोफेसर हे सरलेडी मोठो बहुत बड़ बयस रे। सो सेमिति भी टीचर अछंती। आउ सुस्मिता मैडम जने टीचर थिले रेवेन्सा रे, सी क्लासरूम रो आसीबे, सी तापरे स्टाफ कॉमन रूम बाहर बसी कि पिला को डाउट सॉल्व करिवे, हार्डली टिके न स्टाफ कॉमन रूम रे बसी पुनी पाठ पढे पढे। एमिति टीचर माने भी अछंती, किंतु मैक्सिमम टीचर्स माने तांकर चाकरी रो जो बेनिफिट नै कि स्टूडेंट्स मन को पास ऑन करलेनी, सेथि पई प्राइवेट कॉलेज फ्लरिश करला। सेथि पई गोटे जनरेशन जो भूल कला, से पे ता पर पीढ़ी वर्तमान भोगुछती।
right, right, right. and it cannot be undone. So गोटे बहुत बड़ा revolution जदि academic revolution आसीबो ताहाले किछि हबो, otherwise I don't think things are going to really get settled so soon. Academic revolution तक हम expect करि परिबा by when? Any expected NEP आसी जाइछि, मते लागुछि NEP रो syllabus को देखिकी कि गोटे revolution तो हबा को जाउछि. Previous generation of thought process जहा थिला, upcoming generation of thought process केबे भी से हबा को जाउनी. We are going to see a great change in the mindset of the generations, and it is going to be highly diverse from each other. किंतु जो गवर्नमेंट स्कूल रो रेनांसा जो हबो सेटा ऊपर मु किछि कहि परिबिनी, सेटा केबे हबो, कोन हबो, केमिति हबो, I really cannot say anything about it. सर कॉन्फिडेंस एमिति गोटे की जोटे कि मते लागे मोर जति के एक्सपीरियंस अछि, मते लागे दैट इज द ओनली ओरा व्हेन वी कैरी दैट नो वी विल ऑलवेज बी इन विन विन सिचुएशन. तो बहुत पिला अछंती जो माने कि कम्युनिकेशन तांकर भलो अछि अनडाउटेडली, किंतु ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से माने ओपन अप हे परनांती. गोटे हला पिला. नेक्स्ट होची इफ आई टॉक अबाउट द वुमेन who want to restart their career after a gap, that can be motherhood, that can be anything. तो से gap रे जते बेले women माने रहुचंती ना, somewhat they lose confidence. तो सेटा केमती से माने regain करिवे, youth माने से confidence टा develop केमती करिवे, consistent केमती रखिवे. As I have already stated, LSRW को follow करा, अन्य मानन को सुना, तापर निजो को भी सुना. And let me tell you, practice makes a man, women, old man, old women, gentlemen, ladies, queer groups, everybody perfect. But समस्त perfect है जिबे, किंतु practice करिया But say that- पड़ेगा. No one is a born speaker. True. Everybody is trained. And how can you train yourself unless you practice hard, you practice a lot, you keep on rehearsing. So it may not be a battlefield, but still you need to sweat a lot. yeah. You have to practice a lot. But sir, Gen Z रे आपन को लागुनी पिला माने एठी ही लैक करचंती. They have that give up attitude. से माने फोकस करि पर नहीं, मु से कहबी दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन टाइम. आमे जदि आमो एंगल रो देखिबा, हमको से माने बोधे भूल लागिबे, किंतु तांको एंगल रे बोधे आमे भी भूल हेजिबा. So it's just a gap of generation. So गोटे generation सदा it's no गोटे generation सदा वाला अन्य generation को भूल ही को है. So like जो माने 1990s born समान चल कहबे 1990s गोटे बढ़िया decade. जो माने 2000 millennium रो first decade born समान कहबे आम decade ता सबुटु बढ़िया. So saying that they will give up, no. आमे रेडियो टीवी जुगरे जन्म होइथिलु, वी आर डिफरेंट. सेमाने स्मार्टफोन रे टाइम रे 5G टाइम रे जन्म नै छथि, सो दे आर डिफरेंट. सो we have no comparison at Hey, all. sir, my point is what happens, suppose you are guiding one of your students and you say that these are the things which you need to do on a consistent basis, so by so and so date or time whatsoever you will improve to some extent. पिल्लांकर सेट कोने सपोज आपण गोटे 21 डेज रो चैलेंज देछने, पिल्ला 2 दिन 3 दिन 4 दिन गला तापर गिव अप एटीट्यूड. सेटा त आगुर भी करथिले, सेटा जन्मांतर रो कथा लोक आगुर भी करथिले, एबे भी करथिले. सो कहि देबा पे कि एटा केवल जेनजी मानकर गोटे एटीट्यूड, एटा भूल आई वुड से. काहे कि ना लोक माने आगुर भी सेमति भूल करथिले, एबे भी it's not a kind of tagline of a particular generation. एटा सब जनरेशन लोक भूल करते, सब जनरेशन लोक गिव अप करते. विंस्टन चर्चिल आज 100 वर्ष पूर्व कहिथिले गोटे जगह रे कि नेवर गिव अप. से काहे सेतले कहिथिले, सेतले लोक गिव अप करथिले. सो गिव अप करिबाटा गोटे नुवा जिंस नुहे. हां, आम प्रीवियस जनरेशन ने बहुत माड मारथिले टीचर माने स्टूडेंट्स मान को. आम टाइम रे भी टिके माड हो जाउथिला, किंतु आम स्टूडेंट मान को बहुत गेल्ला बारे कहिया को पडुची. आउ 10 वर्ष 20 वर्ष परे बोधे पिला को आहुरी गेल्ला करी माने पाठ पढिया को पडिबो. सो एटा जस्ट माने
passage of time and maybe who knows तापर बोधे आउ गोटे समय आसे पुणी माठ मरे बाटे आरंभ हबो हे पारे हे पारे कोन कोन गोटे साइकिल प्रोसेस हे पारे गोटे आ कोन सो सब टाइम रे लोक गिव अप करिसंती माने आपण कहउ चाहउछंती कि माने गिविंग अप इज अ नेचुरल टेंडेंसी बीइंग अ ह्यूमन it's something that is not so great up to an extent, but at sometimes giving up is good, but giving up all the wrong attitudes or राइट एटीट्यूड तो सर should not be given up. सर केमिति सेटा करिवे पिला से गिव अप एटीट्यूड केमिति माने छाडी परिवे हां ता पे बहुत गुडे लाइक मो सेस्थि पे नो नेवर गिव अप ऊपर मोर ओडे स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन मो बहुत जगह जे कि पिलां को पढाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऊपर पढाए हाउ टू स्ले नर्वसनेस सेटा ऊपर पढाए सो सेटा स्टेटस रे मु देखि छी बहुत दिन आपण सेटा को टैग करि के रखिथिले हां स्ले नर्वस सर एग्जैक्टली ताको बन के डिफाइन करले स्ले नर्वस हां मु डिक्शनरी मीनिंग तो जानि छी बट ताको कनेक्ट करि पारे हां कनेक्ट मु पर्सनली फील करे हां nervousness is something in our body that needs to be slayed down by our confidence. Okay. आमर nervousness अच्छी, आम confidence अच्छी कोटे खंडा. आमको ये खंडा रे confidence होता आम nervousness को काटी के मारी बार अच्छी. आमे nervous हबा. सेटा very much a common thing. एटा कोटे स्वाभाविक जिंस आमे nervous हबा. किंतु nervousness हबाटा is not a problem. Nervousness को न हरई पारिबा is the problem. और नर्वसनेस को हमें केते बळे हरबा जले कॉन्फिडेंट हबा हमें कॉन्फिडेंट केते बळे हबा जले बहुत प्रैक्टिस करिबा सो अब मु जदी कहिबे कि मु नर्वस हेबिनी कॉन्फिडेंट हेबी एमते भाबी देले हबनी हमको तापे प्रैक्टिस करिया को पड़िबो प्रैक्टिस न कले किछि हबनी वन हैज टू गिव टाइम वन हैज टू प्रैक्टिस इफ आई विल से नो मु खाली भाबी देबी जिंस हे जिवो सेमते किछि हबनी मते करिबा को पड़िबो कले ही हबो न हले हबनी सेबे माने आपण कहै छ निज को ही पुश करिया को पड़िबो अनडाउटेडली देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव नो शॉर्टकट मते भूख लागु छी मते खाया को पड़िबो मो बौ मो पई रोसई करि के दे परिबो किंतु मो पई मो बौ तो खाइबोनी ना इनफैक्ट माने मा खुआई दे पारन खाइबा काम तो करिया को पड़िबो सो मो जत्ते जहा करे मते टीचर पढाई परिबे मते बापा मा गाइड करि परिबे मते मो मेंटर रास्ता देखै परिबे किंतु अल्टीमेटली मते ही तो से काम करिया को पड़िबो ना सो वन नीड्स टू वर्क हार्ड सर आपनकर 18 वर्षर करियर भीतर आपन बहुत सारा पिला मन को पाठ पढै छंती बहुत एज ग्रुप को भी हैंडल कर छंती जतले मते 23 वर्ष हितला मोर ओडे स्टूडेंट माने मोर बहुत गुडे स्टूडेंट सेतबल टाइम रे 45 44 55 हां एज बिकॉज़ यू वर एसोसिएटेड इनटू ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग रे तो हां देयर इज मते 24 25 वर्ष हितला मोर स्टूडेंट माने थिले 45 वर्ष 50 वर्ष हां हां आ सेही पर्टिकुलर बैच रे इवन पिला भी थिले 15 वर्षर मोर मन अछि गोटे बैच रे बोते स्टैंडर्ड 10 र पिला थिले आ गोटे जणा माने elderly माने ट्रेनी थिले तांको एज प्रोबेबली ही वाज अबाउट टू रिटायर आफ्टर 5 years माने सेतल 60 years ताकर थिला तांको पर्टिकुलर कंपनी रे सो ही वाज अराउंड 55 प्लस सो 15 प्लस भी थिले 55 प्लस भी थिले समथिंग मो हैंडल करछि व्हेन आई वाज 25 इट्स अ स्किल नो इट्स अ स्किल I still have. सर मु ए कहथली कि आपण जत्ते पिलां को पढै छंती बा ट्रेनिंग आपण दे छंती कि गाइड कर छंती मेंटरिंग काउंसलिंग प्रॉक्टरिंग करे छंती गोटे पिलार स्टोरी किंबा एग्जांपल दियंतु जे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करछि ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस एंड सॉफ्ट स्किल्स मोटे पिलार ना कहबी unfortunately he is no more oh I'm so sorry his name used to be Pratish okay सी जत्ते बळे मु गोटे जगह रे एसोसिएटेडली स्पोकन इंग्लिश पढौथिली जत्ते बळे सी आसिला he could not speak at all okay माने सी ठीक से बोधे माने व्हाट को से वाट को होथिला माने पूरा जो पूरा टिपिकल माने से ठीक से पढ़ी पारु नथिला ओके किंतु दी मास परे यू वोंट बिलीव ताकू ता बैच रो बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिलला एया नुहे के ता बैच से सबुठ भलो इंग्लिश कहउथिला किंतु जणे इंग्लिश जमा कहि पारु नथिला किंतु दी मास परे से गोटे 4 मिनिट रो स्पीच देथिला फ्लुएंटली and मु किछि वर्ष पूर्व सुनिली कि somehow or the other he is no more so I felt very bad about it but I had seen like समति आहुरी बहुत बड़े examples अछि but you asked for one so I would say that okay सर एबे कहंतु
आज आउ गोटे मेजर प्रॉब्लम होचे हमर यूथ मानकर टू चूज द राइट करियर बहुत पिला आपण भी पढ़ेला बेले देखिथिबे इंजीनियरिंग कॉलेजेस रो तांकर इंजीनियरिंग रे इच्छा नथिबो जस्ट टू फुलफिल देयर पेरेंट्स विश दे वुड हैव एनरोल्ड देमसेल्फ इनटू इंजीनियरिंग सेम विथ एमबीए आल्सो तांकर जनरल लाइन रे जिबार थिबो पेरेंट्स माने निजरा स्टेटस मेंटेन करे पई का तांको इंसिस्ट करंती तो ए जगह रे हमरो कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल केमिति क्लैरिटी दे परिबो पिलांको टू चूज द राइट करियर नो एक्चुअली क्वेश्चन टा दी भागरे विभर्जित होईची गोटे होची कि पिला माने केमती ठीक बाटटा जानि परिबे सेटा सिंपल कथा दे नीड टू फॉलो देयर देयर एट्रिब्यूट्स से माने जहा धेरे भलो ताको सेया करिवार अछि सेटा पिला जानु नांती जो टाइम रे जानु चंदी से टाइम रे से माने डिसीजन नै पारु नांती माने सेटा ताको अबिका मु कहिबी कि मु आखि बंद करी करी रास्ता रे चालुथिली मोर एक्सीडेंट हे गला सो प्रॉब्लम हो जे मु आखि बंद करी रास्ता रे काहे चालुथिली मोर त आखि अछि सो जदी मु ट्राई करिबिनी वेराइटीज ऑप्शन मु निजे जदी मु जने गोटे करियर को केते बळे जाउची 17-18 वर्ष बेलू सो 17-18 वर्ष रे जदी मु जानी पारुनी कि मो पई कोटा ठीक कोटा भूल ता माने आई एम डिस्टाइन्ड टू सफर राइट सो जदी पेरेंट्स माने ठीक से काउंसलिंग करिवे टीचर्स माने ठीक से काउंसलिंग करिवे स्टूडेंट बे ठीक सीरियस थिबो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम जस्ट सिंपली सेइंग कि मु जानिनी मु किछ डिसाइड करनी इट्स समथिंग वेरी वियर्ड एन आंसर आमे एते एंड आमे कहा विषय रे कहूछु निज करियर विषय रे जदी मु मो निज करियर विषय रे सीरियस न है देन आई एम डिस्टाइन्ड टू सफर राइट सो मु एटा करियर ता छोटा कथा न बट नहीं सीरियस जदी अछंती ताहा बेले समान जानि छंती समान कोन करिवे जदी समान सीरियस नहांती समान केबे जानि परिबेन समान कोथरे भलो जो माने सीरियस अछि ता करियर ने कि दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल हां जो माने अननेसेसरीली सीरियस बट बा तांका सीरियसनेस ता गोटे भूल एंगल रे जाउची देन there will be problem but I might sound a bit rude here but if somebody is foolish enough to choose a wrong path then that person is destined to suffer एटा को के एटा विधिर विधान भूल डिसीजन नेला माने भूल रिजल्ट बाहरिबो ठीक डिसीजन नेला माने ठीक रिजल्ट बाहरिबो सर ए डिप्लोमेटिक सिचुएशन रे व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल ना एठी कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स रा किछि कनेक्शन नाही टू बी वेरी ऑनेस्ट मु गोटे कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बडी मु कहिबी सब जगह कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स अछि एटा भूल हबो हां communication and soft skills can really help a person to improvise his personality or her personality सेटा ही परिबो for example जनकर communication skills नाही और जनकर communication skills अच्छे definitely the person with good communication skills will be liked by the recruiters an obvious thing दी जनकर एका लेवल रा knowledge अच्छे one with wonderful body language wonderful behavioral skills wonderful communication skills will be chosen then the other जदी knowledge एका भलिया हे गला तापरे additional factor कोन से जिनसटा additional skills so eta to obvious which is more important English language or English literature what English? today's world demand English literature or English language English language is required to communicate English literature is not English literature all the literature of the world okay literature is important to live your life how it has a lot of lessons Jemti language will not give you lessons but literature will give you lesson say for example Bhagavad Gita it's a literature it has a lot of stories in it Mahabharata it has a lot of stories in it sir as far as English literature is concerned yes you pick any novel you pick any story you pick any thing or the other एबे तो नुआ आछिना जो फेसबुक रे स्टेटस दउछंती सेटा कोन से भी गोटे लिटरेचर सर व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ Merchant of Venice in our real life a lot केमती सर देखो गोटे लोक गोटे खराब इंटेंशन ने जण को हैरान करिया को माने लोन दउची विद द रॉन्ग इंटेंशन शाइलॉक हां कोन हला खराब इंटेंशन ने देइची हैरान हला एंटोनियो बेसानियो को गोटे भलो रीजन रे हेल्प करिची एट द एंड कार्मिक थ्योरी काहा को सपोर्ट कला एंटोनियो को राइट कार्मिक थ्योरी कृष्ण का थ्योरी ही सेठी काम करची खराब करिवु ultimately till the end Shylock पूरा
गोटे प्रॉमिसिंग कैरेक्टर अच्छी एट द एंड पूरा पूरी नोवेयर एंटोनियो तार तार बेसिसटा होची बहुत प्योर थिला बहुत प्योरिटी सहित सी बेसानिया को हेल्प करथिला एट द एंड ठीक एट द राइट मोमेंट पोशिया कम्स एंड हेल्प्स एज एन एंजल सो ताठु बड़ कोन हेई परिबो as short as possible रे 2 lines रे पिलां को कोन बिकॉज़ मैक्सिमम पिलां को एटा क्वेश्चन रोची कि यार रियल लाइफ कनेक्शन किछ नै बट आमे ओवरबर्डन होचो एथिरे तो ए माने जो लिटरेचर पढिबा नोवेल्स पढिबा हला जो डिफिकल्ट प्रोज सब थाए ताको पढिबा हला माने रियल लाइफ रे से माने गोटे जिंस जानछोनी खाली वी आर लर्निंग वोकैबुलरी एंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑल दिस थिंग्स या टू बियॉन्ड आउ कोन कनेक्शन अछि रियल लाइफ सहित जोथि पय का एकेडमिक रे इट इज कंपल्सरी टू स्टडी लिटरेचर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ दैट टीचेस अबाउट लाइफ दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से लिटरेचर टीचेस अस अबाउट लाइफ जीवनटा कौन लोक को लगे जीवन विषय कौन जानिबा दरकार अरे जीवनटा ही तो मिली जीवन विषय जानिबा ने कहा विषय जानिबा सो जीवन विषय में केमती जानिबा जेतला में अन्य मानकर जीवन शैली को पढ़िबा जानिबा ऑटोबायोग्राफी पढ़िबा बायोग्राफी पढ़िबा आमे जानिबा कि अन्य लोक माने अन्य समय रे केमती संघर्ष करछंती आ से माने केमिति सक्सेस पाई छंती जेतेबेले आमे वेराइटीज ऑफ दी स्टोरीज को पढ़िबा आमे जानि परिबा कि समय अलगा किंतु स्ट्रगल सब जगह रे अछि समय अलगा भूल आउ ठीक रो जो वॉर सदा बळे रहिछि न्याय सब जगह रे रहिछि अन्याय सब जगह रे रहिछि सर ता माने आपण माने डू यू मीन टू से दैट पीपल लीड अ बेटर लाइफ हु आर इनटू लिटरेचर ओवर टेक्नोलॉजी एंड साइंस no I'm not saying that. What I'm trying to tell you is literature tells you about life. When you know about life, you accept things in a more matured manner. So if there will be a competition between science, technology and literature, who will win? If I'll ask you if there will be competition between a hawk and a fish to figure it out who is going to run faster, who will win? कहीं पारिबनी केबे ना ना हॉक आसिकी तळे दौड़िबो ना पानी रु बाहरी की माछी दौड़िबो केही दौड़िबेनी सो एटा गोटे कंपैरिजन केबे हेई पारिबनी पिल्ला को बिहेव रे पछरली बिकॉज़ पिल्ला को एटा थाई पिल्ला मन को पछल एमति तांको आउ दु तीनटा वियर्ड आंसर क्वेश्चन पछरी की तांको कंफ्यूज कर दबो काहे कि ना जेते जो जिसर कंपैरिजन हेई पारिबनी इंजीनियरिंग कॉलेज रे पढौथिली से माने बीटेक पिल्लांकर दे आर वेरी लेस इनक्लाइंड टुवर्ड्स तांकर सबले मन रे थाए कि हमर तो career in science and technology, why to study this thing, why this is a part of our it is just a choice I would say अभी का मु लिटरेचर पढुची that doesn't mean कि मु कहबी कि ना मोबाइल यूज करिया भलो नुहे मु कहबी मु साइंस टेक्नोलॉजी यूज करिबी नहीं नो आउ बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट्स माने दे आर आल्सो वंडरफुल रीडर्स से माने बहुत पढंती सो जो मानकर नॉलेज अछि से माने साइंस लोक लिटरेचर को एक्सेप्ट करंती लिटरेचर लोक साइंस को एक्सेप्ट करंती सो आमे साइंस हला कि लिटरेचर हला कि साइंस हला कि आर्ट्स हला कि कॉमर्स हला आमे ता भीतर डिफरेंशिएट करिबा ताहले एटा नॉलेज नुहे एटा गोटे कोन कहले मियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग जेतेबेले आमे नॉलेज ऊपर कथार्ता करूछु सब जिंस इंपोर्टेंट लाइफ रे कॉमर्स रो भी इंपोर्टेंस अछि लाइफ रे आर्ट्स रो भी इंपोर्टेंस अछि लाइफ रे साइंस रो भी इंपोर्टेंस अछि वी कैन नॉट से नो टू एनीथिंग But when it comes to weightage, no, everything is important. Everything is important. We cannot categorize into by giving numbers. आमे कहिबा कि पृथ्वी रो आरंभ रे कोन थिला साइंस थिला ना आर्ट्स थिला ना कॉमर्स थिला आमे की कहिबा कि कॉस्मिक साइंस थिला किए कहबो कि नाही कॉस्मिक साइंस पूर्व भगवान थिले स्पिरिचुअलिज्म थिला किए कहबो कि भगवान जतबेले थिले भगवान जो लीला करथले सेटा होची लिटरेचर आउ अरे ये सब कोन एटा तार हमें किछ एंड पाई परिबानी माने मापी परिबानी सब जिंस इंपोर्टेंट सब नॉलेज इंपोर्टेंट we need to give importance to everything the more you know the better personality you become sir what the last question मु आपन को आज को बोधे आई गेस 15 वर्ष हे जो जानु छी तो मु 15 वर्ष भितर गोटे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर देखि छी इवन दो यू आर अ पर्सन हु बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर हु हैव मेड इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एज अ प्रोफेशन बट स्टिल you are equally inclined
towards Odia rituals, Odia literature, Odia culture. Even आपन को updates रे भी मु देखि छी आपन हमर जति कि rituals रहि छी जेंते भी recently गला डंगा भसा पंचुक माने जोडा माने अति ट्रेडिशनल जिंस रहि छी आपन ताको माने पूरा इक्वली सेलिब्रेट करंती माने पूरा ऑथेंटिसिटी थाए इवन आपन गोटे ग्रेट फैन हमर लेजेंडरी सिंगर श्रीजुक्त अक्षय महांती करो आपन को रिंगटोन ता एबे भी अछि पुण्यर नदी तीरे तो या पछरे रीजन कोन मु ओडिया मु भारतीय मु ओडिया बोली गर्वित मु भारतीय बोली गर्वित आउ कौन कहबी आउ जदि मु निजरा मातृभाषा आउ मोर मातृभूमि प्रति इनक्लाइंड न रहिबी बा डिवोटेड न रहिबी देन किछि माने नाही गोटे फॉरेन लैंग्वेज शिखिकी फॉरेन लैंग्वेज कहिबार सो फॉरेन लैंग्वेज टे मु शिखिची फॉरेन भाषा कहूची पिला को फॉरेन भाषा पढ़ौची काहे कि ना इट हैज बिकम द जॉब लैंग्वेज एटा रिक्वायरमेंट अछि अबिका बट दैट डजंट मीन कि मोर मातृभाषा बा मोर मातृभूमि कोनोसी परिमाण रे कम ओडिया गोटे बहुत सुंदर भाषा ओडिशा गोटे बहुत सुंदर प्रदेश भारत आमर माता आउ आमे सबु एई जिंस बा एई तत्व को पूजा करिबा उचित आ मु ताको बहुत अधिक मात्रा रे पूजा करे भल पाए आउ 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 गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर केमती न कहिबी आम ओडिशा बासी हबा पई मते बहुत बहुत खुशी लगे काहे कि ना माने एठी हमर जगतरनाथ जगन्नाथ अछंती आउ आई एम रियली हैप्पी to be a part of this part of the world काहे ना जो जगन्नाथकर माने अढ़े पाहचरे काशी विश्वनाथ बसिचंती से जगतरनाथ जगन्नाथ केते उच्च न होइथिबे केते महान नहंती से सर आ गुटे पर्सनल क्वेश्चन विथ योर ड्यू परमिशन आई वुड लाइक टू आस्क हां श्योर सर आपनकर पोस्ट रे मु देखि छी माने नॉर्मली गोटे माने आमे वी बिलोंग टू ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो थी कि माने मेल मानकर गोटे डिफरेंट मेल ईगो रही छी तो समस्त यूजुअली तांकर वाइफ मान को जति कि भल पांदी भल तो ऑब्वियसली पाउथिबे पांदी इवन आमे वाइफ आई अंडरस्टैंड दैट बट समस्त सेटा को शोकेस करंतिनी एथि पाई का नॉट बिकॉज़ कि दे डोंट वांट टू शोकेस बट सोसाइटी रो कंडीशनिंग ए भले है जदी ओडे पुओ त स्त्री को पब्लिकली प्रेस करूची ता माने से हैंडपिक्ड माने जोरोका गुलाम से पुओ नुहे सेति पाई त स्त्री को मुंडरे बसैची बट मु आपनकर सब पोस्ट देखि छी आपन माने ड्यू रिस्पेक्ट दियंती आपनको वाइफ को प्रति स्मॉल लिटिल थिंग्स पाई बे आपन बहुत माने प्रेज करंती तो ए विषय आपन कोन पे माने यूथ मान को आपन कोन मैसेज देबे माने ए जो मेल इगोटा मेंटेन होबा दरकार कि मेल इगोटा सप्रेस करले तार किछि गोटे बेनिफिट रही छी माने you are a literature person you can better explain this thing but I wholeheartedly admire that thing that's a courage every man cannot do that हाँ नहीं but by telling the word male ego you have made it a negative version right सर मो भाषा रे मोर ऑडियंस को भाषा so male self respect कहले पॉजिटिव हे था male ego कहले नेगेटिव हे गला नहीं no you need not be sorry about it एटारे no look मो बापा को रेस्पेक्ट करूची बो को भी रेस्पेक्ट करूची मो निज को रेस्पेक्ट करूची मो वाइफ को भी रेस्पेक्ट करूची मो पुओ को भल पाउची मो झियो को भल पाउ सर लास्ट क्वेश्चन आपन को पाई का एटा सेकंड लास्ट हला आप देखे कितना लास्ट होउची ना एटा लास्ट सर फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर माने आजिरो यूथ माने तांकर टार्गेट रहिला गोटे मैनेजमेंट की टेक्निकल सेक्टर रे गले या तांकर जहा इच्छा गले जॉब पाइले पैसा कमेले मैरिज कले छुआ पिला हैला घर गाड़ी जहा तांकर स्वप्न रहउची कले ता परे भी दे आर नॉट हैप्पी विद इट तो आपण एमती गोटे सक्सेस मंत्र कहंतु यूथ मान को पाएगा जो थरे कि से माने नॉट ओनली फुलफिल देयर करियर इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन parallelly they will be having their peace of mind or a fulfilling life get connected to literature philosophy and spirituality okay बहुत लिटरेचर वही पढ़ंतु बहुत फिलॉसफी विषय रे पढ़ंतु आ स्पिरिचुअल वर्ल्ड सहित कनेक्टेड हुंतु डेफिनेटली देयर विल बी ब्लिस not happiness
ताठू बहुत ऊपर लेवल जिनस ब्लिस दे विल अटेन. ठीक अच्छे सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेसियस टाइम. आई एम श्योर जो भी ऑडियंस मैंने एटा को देखी थे, डजंट मैटर वेदर यू आर लिसनिंग फ्रॉम कटक और भुवनेश्वर, बरहमपुर और एनी कॉर्नर ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टेट ओडिशा. दिस पॉडकास्ट एब्सोल्युटली meant for who is involved into this. To get more insight or more such podcast from intellectuals like Dr. Anshuman Mohanty sir, stay tuned to Udaan Academy podcast by Trupti. Thank you. Namaskar.